Yeah, madam, you can start now. Yes, sir. Good morning, everyone. I'm Roshni here. Good morning, ma'am. Good morning. So today's my topic is Nikhila method multiplication. Nikhila means what is the base method of multiplication. Okay. So let's see what is the base method of multiplication and how we can apply in a maths. जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, बेस मेथड के लिए, तो आपको चाहिए कि व्हाट इज बेस, एक्चुअली बेस क्या है ये आपको पता हो. सो हम फर्स्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज द बेस. सपोज आई एम टेकिंग हियर द नंबर 12. सो 12 नंबर ये किसके नियरेस्ट है? द पावर ऑफ 10, 10, 100, 1000 और लाइक दिस. तो आपको क्या देखना है कि ये जो हमने नंबर लिया है 12 वो किसके नियरेस्ट है. सो 12 इज नियरेस्ट टू द 10, राइट. सो ये हमारा बेस क्या हो गया? 10. सपोज नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट नंबर 98. सो 98 किसके नियरेस्ट है? 100. यस, इट इज द नियरेस्ट टू द 100. सो हमारा बेस क्या हो गया 98 के लिए? 100. इफ इट इज 104 देन इट इज नियरेस्ट टू द 100 again. 100. थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं. 998. ठीक है. तो 998 ये किसके नियरेस्ट है? 1000. 1003 it is nearest to the 1000. 1000. जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इन अ बेस मेथड, तो आपको और एक कॉलम की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, वो है डिविएशन. सो हम ये देख लेते हैं व्हाट इज डिविएशन. ओके, डिविएशन क्या है? जब आपका ये जो नंबर है वो आपको ये बेस नंबर में से माइनस करना पड़ेगा. ठीक है. तो 12 माइनस 10 यू गॉट. Yes. 12 plus 10 कितना होता है? 2. आपका ये जो 2 आया है इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव. ये आपको सबसे मेन पॉइंट है जो ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके जब भी माइनस हम बेस मेथड से कर रहे हैं, बेस मेथड मींस 98. अब सपोज नेक्स्ट नंबर यहाँ पर मेरा 98 है. 98 में से अगर हम 100 माइनस करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? -2. सो आपको क्या करना है, ये सिंबल्स जो आ रहे हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं. सो 104 माइनस 100 इट इज 4. 998 माइनस 1000 इट इज -2. आपके ये जो प्लस माइनस आ रहे हैं वो आपको ध्यान में रखकर करना है. ठीक है. 1003 माइनस 1000 यू गेट 3. इट इज पॉजिटिव 3. सो ये क्या हो गया है आपके डिविएशंस. अब आपको ये पता करते हैं कि हम जो बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. सो फर्स्ट टाइप में आता है आपका अबोव द बेस मेथड. जो भी नंबर है आपकी, जो आपने बेस लिया है उसके आगे के नंबर हो. ठीक है. सेकेंड नंबर बिलो द बेस मेथड. एंड थर्ड टाइप इज if one number is above the base and one number is below the base. हम इस टाइप के एक एक दो क्वेश्चंस लेंगे और उसको समझेंगे. ठीक है. फर्स्ट टाइप में लेते हैं हम above the base मेथड. उसके एक दो एग्जांपल ले लेते हैं. if I want to multiply a 12 into 14. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये दोनों नंबर किसके नियरेस्ट है. सो इट इज नियरेस्ट टू द 10. सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, आपको डिविएशन निकालना होगा.
डिविएशन निकालने हमारा क्या करना है, हमें जो भी हमारा नंबर है उसको हम क्या करेंगे 20 नंबर से माइनस कर देंगे. So 12 minus 10 कितना होगा? 2. It is plus 2. And 14 minus 10 it is Plus 4. plus 4. हमारा एज अ बेस 10 है, तो हम क्या करेंगे इसकी डिग्री फिक्स कर लेते हैं कि हमारी प्लेस कितनी प्लेस पे हमारे डिविएशन की मल्टीप्लिकेशन आएगी. 10 इज कंटेनिंग 1 zeros, राइट. सो हमारी प्लेस कितनी होगी यहाँ पर, सिंगल प्लेस में आंसर आएगा. 4 to the 8, राइट. अब आपको क्या करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन करना है यहाँ पर. आइदर यू कैन ऐड 12 plus 4 और 14 plus 2. आप दोनों में से कोई भी नंबर को किसी भी तरह क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा. सो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप ऊपर का नंबर लो या नीचे का. अगर आप ऊपर का नीचे का नंबर चूज करते हो, इट इज 14, तो आपको क्या करना है, क्रॉस में ही प्लस करना है. ठीक है, 14 plus 2, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 16. अगर आप 12 plus 4 करते हैं तो भी आपका आंसर 16 आएगा. सो योर फाइनल आंसर इज 168. 168 is your final answer. ये हमने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया था, राइट. थोड़ा सा बड़ा नंबर का भी एक एग्जांपल लेकर इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं. सपोज 1003 into 1004. क्या करना है हमारा, फर्स्ट स्टेप हमें क्या देखना है, आपको देखना है ये नंबर किसके नियरेस्ट है. सो इट इज नियरेस्ट टू द 1000. वेरी गुड, इट इज नियरेस्ट टू द 1000. तो हमारा बेस क्या हो गया, 1000. 1000. क्या करना पड़ता है, डिविएशन निकालना पड़ता है. डिविएशन निकालने हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर है उसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये 20 नंबर है उससे माइनस कर देंगे. सो 1003 minus 1000 you get 3 plus 3. और 1004 minus 1000 it is Plus 4. ठीक है. अब हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे डिविएशन है सबसे पहले हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो आपका कितना आएगा, 3 4 दा 12. आप 12 लिखने से पहले यहाँ पर यही चेक करेंगे कि आपकी डिग्री कितनी होगी. जब भी हम डिविएशन लिखते हैं, डिविएशन की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, प्लेस फिक्स करनी पड़ती है इसकी. तो यहाँ पर 1000 है, 1000 में कितने जीरो है, इट इज 1 2 3. 30. यहाँ पर कितने प्लेस में आपका आंसर आना चाहिए, 3 प्लेस में. बट आपका आंसर कितना आया है, 3 4, तो आपने कितना लिखा, 12. सो इज इट 3 प्लेस, नो, ये तो 12 इट इज 2 डिजिट आया है. ठीक है, हमें 3 डिजिट में आंसर लिखना है. सो जस्ट एड योर 0. ओके, सो ये आपकी डिविएशन की प्लेस फिक्स हो गई है. अब हमें क्रॉस वेरिफिकेशन करना है. क्रॉस वेरिफिकेशन में आप या तो 1003 को 4 से प्लस कर सकते हो या 1004 को 3 से. आपका आंसर सेम आएगा, 1007. सो इट इज योर फाइनल आंसर, 1007,012. इतने बड़े नंबर को भी हम क्या आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ये जो 2 एग्जाम्पल हमने देखे वो दोनों एग्जाम्पल कैसे थे, अबोव द बेस मेथड थे. कोई डाउट इसमें? No. No, ma'am. ओके, सो हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं. नेक्स्ट टाइप है हमारा बिलो द बेस मेथड. ठीक है, बिलो द बेस मेथड के हम सम एग्जांपल्स ले लेते हैं. सपोज हियर 84 into 98. ठीक है, तो ये दोनों नंबर किसके नियरेस्ट है, 100. 100. सुपर. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस करना है. 84 minus 100 and 98 minus 100. हाँ. So- तो इसको हम बोलते हैं डिविएशन. हमें क्या Division. निकालना है, नेक्स्ट स्टेप डिविएशन निकालने. डिविएशन हम कैसे निकालेंगे कि नंबर जो भी हमने नंबर लिया है उसको हम जो भी हमारा बेस नंबर है उससे माइनस कर देंगे. तो 84 minus 100 you will get here minus 16 and 98 minus 100 you will get here minus 2. 2. राइट.
हमें उसके बाद में क्या करना होगा, यहाँ की जो हमारी डिविएशन की हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं उसकी प्लेस फिक्स कर देते हैं, ठीक है। सो 20 नंबर यहाँ पर 100 है हमारा, 100 में 2 जीरो से हम यहाँ पर 2 डिजिट फिक्स कर देंगे। 16 टू द 32। 32। हमने देखा अबो द बेस मेथड में प्लस था, राइट, हमारी साइन जो थी वो प्लस थी, तो हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है उससे हम प्लस कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारी जो साइन है वो माइनस साइन है, इस बात को हमें ध्यान रखते हुए क्या करना है, हमें माइनस ही करना है। आइदर यू -2 फ्रॉम 84 और 98 -16। इसमें आप एक चीज कर सकते हो कि कोई कहीं से भी आप माइनस करोगे आंसर सेम आएगा, तो जो भी इजी जाता है हम वो नंबर ले लेते हैं। तो इट इज यदि कि हम 84 -2 कर ले तो 82 आंसर आ जाएगा हमारा, राइट। तो योर फाइनल आंसर इज 8232। अगर हम वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड में भी हम जो बड़े बड़े नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं तब थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इट इज वेरी सिंपलेस्ट मेथड कि हम बेस मेथड से इसको फॉलो कर ले। एक और एग्जांपल बिलो द बेस मेथड के लिए, (998) into 997. So it is nearest to the 1000। super. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिवीजन निकालेंगे। डिविएशन। डिविएशन, यस मैम। तो 998 minus 1000 is equal to -2 वेरी गुड, and -3। 997 minus 1000 -3। सुपर। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारी जो डिग्री है डिविएशन की उसको फिक्स कर लेते हैं, राइट। यस। सो प्लेस में कितने जीरो है यहाँ पर 1000 में 30। तो है, हम यहाँ पर 3 डिजिट हमारी फिक्स कर लेंगे। तो 2 3 जा 6। यहाँ पर माइनस माइनस साइन है इसीलिए हमारी प्लस साइन हो जा रही है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस हमारी साइन क्या हो जा रही है, प्लस। अब यहाँ पर एज अ हमारी एक सिंगल डिजिट आंसर आ रहा है, लेकिन हमें कितने डिजिट में आंसर कवर करना है, 3 डिजिट। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर दोनों साइड में 0 लिख लेंगे, दोनों जगह पर। आइदर यू माइनस सब्ट्रैक्ट 998 को हम 3 से माइनस कर लेते हैं, या 997 को 2 से माइनस करते हैं, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, 995। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, 995006। और कितना बड़ा सम हमने कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर लिया, राइट। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से इसको फॉलो अप करते तो इट टेक फ्यू मिनट्स एटलीस्ट, बट अगर हम इसको बेस मेथड वैदिक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको फ्यू सेकेंड्स में सॉल्व कर ले रहे हैं, राइट। सो लेट्स गो टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है कि हमारा एक नंबर थोड़ा सा, सपोज 98 इंटू 104 हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो 98 है वो बिलो द बेस है, राइट, और 104 है वो अबो द बेस मेथड है। सो दोनों नंबर तो हमने लिए, दोनों डिफरेंट नंबर्स है, बट बेस इसका सेम होगा। तो दोनों नंबर नियरेस्ट टू द 100। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप डिविजन फाइंड आउट करते हैं। डिविजन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, जो भी हमारा नंबर हमने लिया है उसको 100 से माइनस करना होगा। सो 98 माइनस 100 -2 and +4 +4। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, -2 है और +4 है, राइट। ये दोनों की आपको साइन देखनी है, एक माइनस है एक प्लस है। जब भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी साइन क्या होगी, माइनस में आएगी। तो 2 4 जा 8 -8। आपकी फर्स्ट डिविएशन आपको यहाँ पर जब भी मल्टीप्लाई करेंगे डिविएशन की आपको प्लेस फिक्स करनी होगी एज अ 2 zeros in 100। सो हमारी 2 डिजिट में आंसर आएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या होगा, -08। जो भी हम माइनस नंबर है उसको हम विनकुलम, एज अ विनकुलम हम यहाँ पर बार से शो कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है,
यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन में जब आप 98 फर्स्ट नंबर लोगे तो यहाँ पर प्लस साइन है, तो आपको +4 करना होगा। अगर आप यहाँ पर से नंबर ले रहे हो 104 तो यहाँ पर -2 है, आपको -2 करना होगा। इस बात को आप ध्यान में रखें कि आपकी साइन कैसी है, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर माइनस में होगा तो दूसरा नंबर प्लस में होगा। इस बात को आपको स्पेशली ध्यान में रखते हुए क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। तो 104 -2 हम ले लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा 102। आज हमारा आंसर यहाँ पर विनकुलम या नेगेटिव नंबर में, तो हमें क्या करना होगा, इसको पॉजिटिव में बनाना होगा। तो यहाँ पर क्या है 08 जो हमारा नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर को हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 डिजिट हमारी प्लेस फिक्स है, हम क्या करेंगे इसको बेस मेथड 10 में से माइनस कर लेते 8 को, 10 - 8 2 और 9 - 0 इट इज 9, ठीक है। और जो भी हमारा प्लस नंबर होता है बिफोर द नेगेटिव नंबर, जो भी हमारा प्लस नंबर होता है हम उसमें से क्या करते हैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 100 प्लेस की डिजिट हमारी 100 में से ही माइनस हो रही है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस करते हैं। सो यू गेट हियर 101। दिस इज द योर फाइनल आंसर। ये समझ में आया आपको? यस मैम। यस मैम, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल इसी मेथड का ले लेते हैं। (91 into 112). So this both number are nearest to the 100 100। हम क्या करेंगे, इसकी डिविजन निकाल लेते हैं पहले। So 91 - 100 you get here -9 and +12 is +12। प्लेस फिक्स कर लेते हैं। अब here 2 डिजिट हमारे आंसर कितने में आने चाहिए, ओनली 2 डिजिट में, यस ठीक मैम। है। लेकिन जब हम यहाँ पर डिविएशन कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों नंबर का, तो आपका आंसर कितने डिजिट में आ रहा है यहाँ पर? 3 डिजिट 3 डिजिट। आपको कितने डिजिट में आंसर लिखना है? 2 डिजिट 2 डिजिट। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है 108, और ये नंबर जो 108 है वो माइनस नंबर है, क्योंकि माइनस इंटू प्लस यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर माइनस में आएगा। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन। सो 91 + 12 इट इज 1181 3। अब यहाँ पर आपकी एज अ 2 डिजिट फिक्स थी, तो आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ 08, राइट। हम 08 का पहले क्या कर लेंगे, जो नेगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव बना लेंगे। सो पॉजिटिव बना लेते हैं। क्या करेंगे, 10 - 8 यू गेट 2 मैम 9 - 0 9 9। और ये जो 1 है -1, हमें यहाँ पर एज अ 2 डिजिट चाहिए थी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 डिजिट हमारी हमने निकाल लिए, यहाँ पर हम और -1 लिख देते हैं, क्योंकि जो भी हमारा प्लस नंबर था उसमें से हम -1 करते हैं। तो -1 एंड -1 यहाँ पर आपके कितने हो रहे हैं, -2। तो हम डायरेक्टली -2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। आपको इसमें अगर डाउट है तो आप डायरेक्टली पहले ये -1 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके भी -1, फिर से यहाँ से आपको -1 करना होगा। तो 2 बार हम -1 यहाँ से निकाले, उससे बेटर है कि -1 -2 हम यहाँ पे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लें। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। हाँ, यस मैम। तभी राइट हैंड साइड में बेस का डिपेंड होके हम डिजिट को फिक्स करते हैं ना। डिजिट ज्यादा आने पर क्या करना है? तो कैरी फॉरवर्ड हमने किया है ना, एज इट इज। यहाँ पर का तो नंबर हमने कैरी फॉरवर्ड किया ही है ना यहाँ पर। ठीक है।
यहाँ पर डिजिट हमारी ज्यादा आई थी ना 108, हमारी डिजिट तो फिक्स की हमने 2 डिजिट नंबर। अच्छा जब भी हमारी डिजिट यहाँ पर ज्यादा आएगी तो हम उसको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हम बेस मेथड सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, बेस मेथड ये पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन का भी लेकर देखते हैं कि हम पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन कितनी इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे। सपोज द नंबर इज 2x plus 3 and 3x plus 4। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से पहले इन दोनों नंबर को पहले 3x से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। और देन उसके बाद में ये दोनों नंबर को हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में हम हमारा जो भी इक्वेशन आएगा हम उस इक्वेशन को सॉल्व करके लिखते हैं। बट हम देखेंगे कि आज इस पॉलिनोमियल अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन भी हमारा बेस मेथड से बहुत ही सिंपल वे में, इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ लोवेस्ट एज अ बेस आपको लोवेस्ट डिग्री लेनी पड़ेगी। तो लोवेस्ट डिग्री क्या है यहाँ पर है आपकी 2x एंड 3x। तो दोनों में से लोवेस्ट टर्म कौन सा है, 2x है या 3x है? 2x। 2x। तो आपका क्या होगा यहाँ पर 2x। आपके सिर्फ बेस पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो भी लोवेस्ट टर्म है उसको हम एज अ बेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3x है, तो हमारा जो भी बेस आएगा वो होगा लोवेस्ट टर्म 2x। तो 2x plus 3 into 3x plus 4। तो 2x में से हमने 2x plus 3 में से 2x तो पहले ही बेस में निकाल लिया। तो क्या बचा आपका डिविजन क्या हुआ, 2x plus 3 minus 2x, आपका बचा यहाँ पर plus 3, राइट। एंड 3x plus 4 minus 2x कितना आएगा, x plus 4। 3x में से 2x माइनस हो गया तो 1x ही होगा ना, तो 1x के बदले हम x plus 4 भी लिख सकते हैं, राइट। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जा 12, राइट, एंड x into 3 इट इज 3x। आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि हम जब भी बेस लेते हैं ना अलजेब्रा में, तो अलजेब्रा में प्लेस फिक्स नहीं होती है। वी कांट फिक्स अवर प्लेसेस इन अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन। तो क्यों हम प्लेस फिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी जो टर्म आती है वो एक्स टर्म, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिक्स होते हैं इसके अंदर। तो हमारे आंसर जो भी आते हैं जो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों में आते हैं। सो इसमें क्या करते हैं हम, हमारी जो डिग्रीज होती है वो फिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे हमने नंबर्स में हमारी डिग्री फिक्स की है कि ये डिजिट हमारी 2 डिजिट में आंसर आएगा, 3 डिजिट में आंसर आएगा। सो यहाँ पर हम अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन में हमारी डिजिट फिक्स नहीं करेंगे, जितने भी नंबर्स आते हैं हम एज इट इज लिखते जाएंगे। ठीक है, नाउ क्रॉस वेरिफिकेशन, 3x plus 4 plus 3 हम ले लेते हैं, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3x plus 7। गॉट इट। आपको क्या करना है, आज हमारा बेस यहाँ पर सिंगल नंबर नहीं है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर क्या है हमारा बेस 2x है। तो हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल हमारा आया उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमने बेस लिया है। सो 2x into 3x इट इज 6x squared, 6x square, then 14x, yes, 14 x plus ये दोनों भी आपको ऐड करना है। yes ma'am, 3x plus 12, आपको मल्टीप्लाई सिर्फ इतने को करना है, ठीक है, 2x मल्टीप्लाई 3x plus 7, जो हमारा डेविएशन नंबर है उसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो हमें एज इट इज लिखना है। तो आपका आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर 6x square plus 17x plus 12,
गॉट इट? समझ में आया आपको? और Yes, एक ma'am. एक और एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको लास्ट एग्जाम्पल में, हमारी जो लोएस्ट डिग्री है, जो लोएस्ट वेरिएबल है, हम उसको एज अ बेस ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे दोनों नंबर जो है वो एक्स एक्स है, राइट? यहाँ पर दोनों भी सेम है। सो हम क्या करेंगे, इसका जो भी हमारा बेस है वो उसको एक्स ही लेंगे, ठीक है? और अब हमें क्या करना है, जब भी हम माइनस करेंगे एक्स प्लस वन माइनस एक्स, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर डिविजन में +1, एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, यू गेट +3, राइट? दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 into 3 3 3. क्रॉस वेरीफाइंग, एक्स प्लस 3 प्लस 1 कितना आएगा? x plus 4 x प्लस 4। अब यहाँ पर क्या है, आपका बेस क्या है? X. आपको क्या करना होगा, इसको x से मल्टीप्लाई। सो x into x, X square. x into 4 4x. और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे? No. नो, वो हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। सो हाउ इजी वी कैन सिंप्लीफाई आवर आंसर? बेस मेथड कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है? हम एक और एग्जांपल देखकर देखते हैं कि बेस मेथड से हम क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने देखा कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ठीक है? जो हमने पहले पढ़ा कि हमने 2 डिजिट को अबो द बेस, बिलो द बेस और 1 नंबर बिलो 1 नंबर अबो द बेस मेथड देखा, ठीक है? ये कहाँ तक सीमित है, ठीक है? 5th 6th स्टैंडर्ड तक इतना ठीक है। लेकिन अभी हमने जो ये देखा पॉलिनोमियल अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन भी हम बहुत सिंप्लीफाई से निखिला मेथड से कर सकते हैं। आप इसके लिए डिफरेंट बेस भी यूज कर सकते हो, ठीक है? डिफरेंट बेस क्या होगा? एज 20, 30, 40, इस बेस से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यू कैन मल्टीप्लाई 3 numbers at a time. Suppose the number is 23 into 24 into 25. ये जो नंबर्स है आपके 3 नंबर्स हम एट अ टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तीनों नंबर, बट एक सिंपली कंडीशन है कि ये सेम बेस के हो। तीनों नंबर क्या हम एक साथ मल्टीप्लाई सच में कर सकते हैं? डू यू हाँ। थिंक? So let's see the one example. 23, 24, okay, 26 हम ले लेते हैं। तो ये तीनों नंबर किसके नियरेस्ट है? 20. 20। हमारा बेस क्या हुआ? 20. 20। हम क्या करेंगे उसके बाद में? डिवीजन निकाल लेते हैं। तो डिवीजन निकालने के लिए 23 माइनस 20 +3 +4 +6. वेरी गुड। ये सारे नंबर पॉजिटिव है। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है? हम डिवीजन को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4 दा 72 मैम. 3 4 are 12 and 72. अब हमारा क्या करना है, यहाँ पर आपकी छोटी सी स्टेप्स चेंज हो जाती है, ठीक है? आपको अब क्या करना है, 3 4 दा 12, दो नंबर एट ए टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो 3 4 दा 12 प्लस 4 6 दा 24. प्लस 6 3 दा 18. 18। ये हो गई आपकी सेकेंड स्टेप। नाउ द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन, हमेशा जो सेम हम अप्लाई करते हैं।
अगर आपने यहाँ पर सिंपली ये नंबर लिया, फर्स्ट नंबर चूज किया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को छोड़ देंगे और ये दोनों को साथ में ऐड कर लेंगे। अगर आपने सपोज सेकेंड नंबर लिया, ठीक है, तो सेकेंड नंबर का क्या है, जो भी साइड नंबर है, हम साइड नंबर नहीं लेंगे, लेकिन अब आपको इसके साथ में ये दो नंबर ऐड करने होंगे, 3 and 6, और आपने चूज किया 26, तो आपको ये 6 को छोड़कर ये दोनों नंबर एट अ टाइम लेने होंगे, ठीक है, एडिशन के लिए। सो अभी हम ले रहे हैं 23, तो 23 के साथ में कौन से दो नंबर आएंगे, 6 and 4, 23 प्लस 4 and 6, ठीक है, 33. ओके, इज इट 23, 6, 4, 10, ओके, 33, राइट। सो अभी आपका कंप्लीट आंसर नहीं हुआ है, बेस इतना ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट बेस ले रहे हैं, राइट, जो सब बेस, आप इसको बोल सकते हैं सब बेस ले रहे हैं। हमारी एक्चुअली बेस टर्म क्या होती है, 10, 100, 1000, लाइक दिस, 10th पावर ऑफ n, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, हमने सब बेस लिया है, 20 को लिया है। सो हम क्या करते हैं, इसको हमारे जो भी बेस है, बेस को हम यहाँ पर सब बेस को हम बता देंगे के इन द सेंस, अगर हमारा यहाँ पर बेस है 20, तो 20 मतलब के इंटू 10th पावर ऑफ n, 10th पावर ऑफ n, इसका मतलब होगा 2 इंटू 10। सो व्हाट इज के is 2, राइट। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जैसे जैसे हमारी डिग्री जाती है, लाइक हमारा फर्स्ट वेरिएबल आता है, कांस्टेंट आता है, उसके बाद में एक्स स्क्वायर, हमारी टर्म ऐसे चलती है हायर डिग्री की तरह। तो यहाँ पर भी हमारा जो भी बेस हमने लिया, यहाँ पे हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, सपोज इट इज एक्स, एक्स के बाद क्या आता है, एक्स स्क्वायर, राइट। सो हमारा हम यहाँ पर हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के स्क्वायर से। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4. 4। तो हम 33 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। सो 4 इंटू 33, इट इज 132, और यहाँ पर 2 को 50 मल्टीप्लाई करेंगे, 54 है, तो 108, और यहाँ पर आएगा 72। हमने डिग्री इसकी फिक्स नहीं की है, 20 हमने सब बेस लिया है, उसमें क्या होगा, कितने जीरो है, 1, तो हमारी सिंगल पोजीशन पे, सिंगल डिजिट में हमारा आंसर आएगा, राइट। तो हमें एक एक नंबर लेना है, 2, 7 को कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर हमारी जो डिजिट फिक्स की है हमने, उससे ज्यादा नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस नंबर को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। ये लास्ट प्रॉब्लम में भी बताया था आपको। सो 108 प्लस 7 कितना होगा, इट इज 115। तो हम यहाँ पर भी एक एक डिजिट लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 5, राइट, 11 फिर से कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ पर 132 प्लस 11, it is final, your final answer 14352। समझ में आया आपको? Yes, ma'am. सो हमने देखा मल्टीप्लिकेशन, निखिलम मल्टीप्लिकेशन से हम बहुत सिंपल वे में बड़े बड़े नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उससे हम अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रा में भी हम निखिलम मेथड यूज कर सकते हैं, और एट ए टाइम हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट सिंपल एक कंडीशन है इसके अंदर कि आपकी जो बेस होगी ये 3 नंबर्स की, वो सेम बेस होगी। सो एनी डाउट्स? No, ma'am. ओके सर, थैंक यू सर। मैडम, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू इसी तरह जो बड़ा पॉलिनोमियल है, तो उसको कैसा करते हैं? सर रूल तो यही होगा, बस थोड़ी Okay. सी कैलकुलेशन जो है वो टिपिकल हो जाएगी। अच्छा।
हमारे रूल्स चेंज नहीं होंगे, आपको सिर्फ लोवेस्ट टर्म एज अ बेस लेना है और उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है। हाँ, 2 डिजिट को भी सेम बेस मेथड से ऐसे ही सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल दे सकते हैं आप 2 डिजिट का? सर एग्जांपल 54 इंटू 59। 54 इंटू 59। यहाँ पर आपकी बेस क्या हो रही है? 50 और 60। ठीक है, हम 50 कंसीडर कर सकते हैं। 50 के लिए आपको एक और स्टेप, बहुत इजी स्टेप पता चल जाएगी। यहाँ पर जब 50 हमारा बेस हो रहा है ना, तो हम एज अ 50 और हम 100 का इसको हाफ भी कर सकते हैं, राइट? ठीक है। सो हम एज अ 50 इसको रखेंगे, ठीक है, बेस कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपकी डिविएशन आ जाएगी 4, यहाँ पर डिविएशन आ गई आपकी 9, राइट? सो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 9 जा 36। 36। यहाँ पर आपकी जो डिजिट फिक्स है वो कितनी फिक्स होनी चाहिए? सिंगल डिजिट। हाँ इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि क्रॉस वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं। 59 प्लस 4 63। 3। यहाँ पर आपका के मतलब मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा नंबर है उसको हम क्या करते हैं 10 पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है 10 पावर ऑफ 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 50 आ जाएगा। सो आपका जो भी के है इन द सेंस एक्स जो है वो क्या आया है? 5। हाँ तो लेट्स टेक कि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें। सो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 63 को, सो आंसर आएगा 63। यस, इट इज 45, राइट? even 5। और यहाँ पर आंसर आ गया आपका 36। 36 में से आपको कितना लेना है? सिंगल डिजिट लेना है। सो सिंगल डिजिट आपका आएगा 6 और ये 3 को हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा, 318। हाँ सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आपने बोला 100 ऑफ बोल के कुछ बोला, वो क्या? मैं आप इसको 100 एज अ 100 बेस भी ले सकते हो। तो इसको क्या करना होगा, जब आप 100 बेस लेते हो, ठीक है, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा। तो 63 का हाफ आप ले सकते हो, लेकिन ये ऑड नंबर आया है, राइट? हाँ इसीलिए हमने क्या किया, इसको हाफ ना करते हुए डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पर सपोज ये आपका इवन नंबर होता तो हम इसको हाफ इनडायरेक्टली करके हम हाफ ले लेते थे। अच्छा। एज अ बेस हम 100 लेते तब, और 100 लेते तो एक चीज और आपकी सिंप्लीफाई हो जाती कि यहाँ पर आपकी जो 2 डिजिट वो फिक्स हो जाती। सो आपको कैरी फॉरवर्ड करने की भी स्टेप कम हो जाती है। सो इवन नंबर आया तो प्लीज कंसीडर कि हम 100 बेस ले लें, जो कि नियरेस्ट टू द 50 होते हैं वैसे नंबर, ठीक है? बड़े नंबर्स को आप एज अ 100 नहीं ले सकते हो। जिसका बेस अगर 50 आता है उसको हम 100 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका हाफ कर ले हम बाद में। तो ऑड नंबर में मैम 0.5 आएगा, लाइक 31.5। तो पॉइंट जो 0.5 का 5 है उसको 3 में ऐड करने से सेम ही आंसर आ रहा है मैम। वो आ रहा है, लेकिन कभी कभी उसकी अगर कुछ प्रॉब्लम थोड़े, ये 31.5 थोड़ा सा
नजदीक नंबर आ गया, लेकिन अगर बड़े नंबर आए तो फिर कैसे बच्चों को कॉम्प्लिकेट लगता है, तो बच्चे बोलेंगे कि उससे अच्छा तो हम सीधे वे में कर लेना। जब हमें कॉम्प्लिकेटेड केस करनी है तो वो बच्चे क्यों इस मेथड को अप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है मैम। हम जब वैदिक मैथ्स मतलब बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है, बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, तो हम यही कोशिश करेंगे कि बच्चे जितना हो सिंप्लीफाई जल्दी से जल्दी और इजी वे में कैलकुलेट करें, ना कि कॉम्प्लिकेट बनाए केसेस को। गॉट इट? और कोई डाउट? नो मैडम। ओके सर, थैंक यू सर। या थैंक यू सो मच मैडम। यहाँ पर सभी बड़े बड़े कुछ एक्सपीरियंस सर भी बैठे हैं, तो प्लीज गलती हुई तो उसको ध्यान मत दीजिए और इम्प्रूवमेंट के लिए सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। या थैंक यू। या मैं या अभी अपन को मैं पोल डालता हूँ, ठीक है, सब लोग पार्टिसिपेट करिए। और 3 लोग बाकी है, वो भी पार्टिसिपेट करिए। सिर्फ 75% पोल हुआ है अब तक, और 3 लोग हैं। सो थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच रोशनी मैम। थैंक यू सर। अब थोड़ा 5 मिनट्स तक अपन ब्रेक लेंगे, क्योंकि अपन को नेक्स्ट क्लास 11 o'clock है। सो एक बार मैं मैडम को इंटीमेशन कर देता हूँ, मैडम आने तक थोड़ा हम ब्रेक लेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली 11 o'clock वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेक्शन। बिफोर दैट मैडम केम, देन वी कैन स्टार्ट इट, सो let us take 5 minutes break. Before that, do you have any doubt related to this concept? You can ask Roshini madam. Sir, can we leave and join again at 11 o'clock? Yeah, sure, definitely, no problem. Thank you, sir. Yeah, Ramesh sir, are you there?
Yeah, sir, can you share your experience in this Vedic maths field, if you don't mind? The sessions which are the sessions which have been telecasted on this seminar, they are very good, and they are especially Dr. Ramesh Koluru sir has given a very good insight into the angle and its measurements by Vedic method. And other participants also, they have given their best, and it is encouraging for others also. They have given a good content. I encourage them to give similar papers in future also. Thank you. And can you share your experience in Vedic maths, not related to this seminar? So, See, my experience means initially I learned Vedic maths, and then when I started teaching Vedic maths in the national seminars or in some schools, etc., students used to ask some questions. They used to ask very intelligent questions, and these have given me an opportunity to look into the solutions asked by the students and have developed my subject. And students should be always encouraged to ask questions so that their doubts will be cleared, and it is an experience to the teachers also if to work on those aspects. yeah. Thank you, sir. And sir, Dr. C.H. Ramesh, sir, can you tell me about you? Pardon, please repeat the. Hello. No, not you, sir. Another Dr. C.H. Ramesh, sir, is there in the conference. Okay. So I'm asking the question too. Okay. Yeah, just now I message to the madam. She will join at any time before 11. So we will wait for 10 minutes more. So here I suggested some best books to learn the Vedic mathematics. Let me show you my screen. Yeah. So you can see here Vedic Mathematics Teacher Manual written by the Kenneth R. Williams. This is a beginner books. After that, you can buy the second book, the intermediate level book. It is also a very good book, and it is having wonderful content. Like you can see here some chapters I given here. सर थोड़ा After, स्लो दिखाइए सर सर प्लीज yeah, बी स्लो no, एंड no, these are in I will dollar show daddy you. Yeah, I these will, are in no, dollar sir can we get yeah, in Indian rupees you can purchase it in like Amazon or somewhere else. okay sir Here already given the Indian rupee 600 is given. teacher manual 2 okay Yeah, this is a like intermediate book. If you want to learn some advanced levels like integration, so and so, for that you can purchase same author Kenneth R. Williams are giving teacher manual level 3. It is like advanced level. So you can purchase this book. And after okay that, you try to purchase from my side triples books.
Okay, Triple is a very good book actually. You can purchase the book also. And after that, you can read Swamiji book. Okay, the Swamiji book is around like 200 rupees. It is available in all over India in local stores. If you ask, they definitely they can provide you this book around 200. This is a very wonderful book. Why? Because this is the original book actually Sir, written who is by the author of Triple, sir? Author Triples of also. Triple? Yeah, Kenneth R. Williamson. Okay, right, sir. And with another author also there, but I don't know another person name. Okay, right, sir. Okay. After that, there is a one wonderful book is there. Like it is freely available in online. The book name is Vertical and Crossway. It having very advanced level concept in this. You cannot imagine also. Let me show you some content so that you can easily understand here. You can see solution not like that. Yeah, inverse of the matrix. Okay, curve fitting, logarithm and exponential, changing the roots of the equation, sine, cosine, inverse of the tangent. Some wonderful concept given by the Kenneth R. Williams in this book. It is also very good book. Suppose if you are not interested to buy this book, I will suggest some Indian books. Let me show you that our Indian books. They are also fine. You can purchase any university books, that also fine. If you are not able to purchase any university books like who are providing the certificate for. Okay. Our Indian books will be yeah. So let me show you our Indian books. I suggested to buy those books. Why? Because almost everything will be covered. Whatever important topic will be there. You can purchase Magical World of the Vedic Mathematics by Unkalkarji. Or you can purchase after you go through this book. The second level will be Excel with Vedic Mathematics. It is also written by the V.G. Unkalkarji. Our Indian books, these two are. You can purchase either Teacher Manual 1, 2, 3, or you can purchase these two books enough for you. No need to buy any other books. But Swamiji book is must along with all these books. So whatever content will be there in whatever book just now I shown you by the Kenneth Williams, most of the concept up to 80%, 70 to 75 to 80%, everything will be covered in these two books. These are our Indian books. Rather than you cannot buy any other books, they are not necessary. So I suggested these two books. Remaining, see now the present Swamiji book having this page cover. First one. Remaining books there is no need to buy. These are enough. These two books are very important for our Indians. Why? Because if you go through the Kenneth R. Williams book, in that book, they are not given many examples. Okay, explanation also very less in that books, but very good concept they are giving. But in those books by the V.G. Unkalkarji, in this book you will get wide explanation along with many examples and practice examples also given by him. So that is the reason I'm suggesting you to try to buy this. The Excel with Vedic Mathematics having the chapters like reverse divisibility rule, combine operations, and integrations, differentiation, and determinants. And in case there is a content is available, let me show you that also in case it is possible. Yeah, no, yeah, content is given here. Yeah, you can see it is visible to you, the content. Reverse and combine operations, addition. That means actually we are solving the addition and everything from the right to left, or we can use the balancing method there.
Yeah. Mm. But in this case, we can do the balancing from left side also. How can we approach to solve the problems? Everything is explained in the first chapter. In the combine operation means, everyone, like board must rule like that. An addition, multiplication, combination at a time we are using there. And the divisibility of odd divisors means it is already available in the Swamiji book. But the different thing is here you can see even divisor divisibility given in the Unkalkarji. Okay, this is a new concept for everyone. If you see the next one, reverse oscillation. Actually, in the Swamiji book, we are doing the oscillation from the unit place digit. But in this बड़ी book, गाड़ी कितने sorry. So in the reverse oscillation method, you can start from the highest place digit also. And general cube also given. And decimal to binary conversion like that few कौन पेन से chapters बच्चों are की there. After वो that, you देखते can see हैं determinant and differential calculus, integration and partial fractions also there. Michelle is like triple concept. It is related to the our trigonometry and the coordinate geometry also there. So this is the book enough for us. For up to intermediate, we can teach the children. Okay. I think around this book cost will be around very less. I think so, below 300. I think so. I'm not sure. But here given that both books not known. So price is not given. Maybe it is not available in the stores right now. So you can directly contact VJ Unkalkarji. He's in our group also, Vedic math teacher in India. So you can contact directly him. He will courier to the books to you on your address. Okay. Yeah, this is my suggestion from my side. And this is a free book. Vertical crosswise, you can search in the Google, you will get the PDF. Who already know about the Vedic mathematics, they can easily understand this book. Otherwise, there is no need to download it. Okay. So remaining books you can see given here. All these books having mostly same content. So that is the reason I'm ignoring those books. Okay. And there are many free books are available in the Google also. You can download it before purchase these books. Because you earn some basic concepts related to Vedic mathematics, then you can purchase this book. Then you can easily understand. Okay. Any doubt related to the books? Sir, all languages are available in this book. No. Only English version is available. I think Unkalkarji books may be available in Marathi. I think I'm not sure, but English version is available. Whatever books just now I shown you, everything will in English version only. Everything, every book. And but Swamiji book was in Hindi language also, Hindi script also. In the Swamiji book, you can purchase. So which university certification you think is the best in for Vedic maths? Not, I cannot judge like which one is best, but I can suggest some university providing certificate course like Nagpur University. Jyoti Pandya, you are already in the Vedic maths teacher India group, am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, and I think few days before I think I sent the university list there. You can check it one. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Right, sir. Good morning, sir. Yeah, good morning. Who's that? Sir, I'm Srivani. Can I take the class onto another phone? Yeah, no problem. Okay, sir. Let me make you host.
मैडम दोनों फोन को अलग अलग जगह पे रखना, क्योंकि एक ही जगह पर रखने पर क्या होता है कि रीसाउंड आता है, या नहीं तो एक फोन को म्यूट करके रखना, तभी इजी हो जाता है। आप No, Posting no. it. Posting it. I need to share my screen. Sir, please need to share my screen, sir. yeah, you can share, ma'am. I make you host also. Just you click on the share screen and you can share. No, sir, it is coming like only the host can share in this meeting. Oh, this is the new number. Okay, okay. Shiva. Okay, okay. I got it. Shiva, right. Yeah, please check now, ma'am. No. Morning. In this class, we have to discuss about the and knowing this application. Here, nowadays, vedic math is using. So, in the competitive exams also, we have shortcuts also. In the vedic math also is used. Ma'am, the voice is not clear, ma'am. We can't hear you. Okay. This is not clear. Ma'am, I can't hear you, ma'am. Voice is very low. Okay, okay. Now is it clear? Yes, ma'am. Okay. So actually Vedic math has the 16 formulas and 13 subsutras. So today we have discussed about the fifth sutra in the Vedic mathematics. That is the Shunya Samya Samuchaya. What is the meaning of Samuchaya? Generally we have taken that the Samuchaya means and so here the Samuchaya having a lot of meanings. So that means nearly 6 meanings have this. So that is actually what is the meaning of the Samuchaya? It is the same. So in this one, whenever the equations are the same, then the Samuchaya is equal to 0. So in this paper, we are discussing about that algebra. So in the simplifications and how can the Samuchaya sutras are applicable in the algebra to the simple equations. So here we discuss about Samuchaya Sutra. In the Samuchaya is the same and the Samuchaya is equal to 0. So this is the first one we are using the Samuchaya Sutra. So in this Samuchaya, we are having the 6 meanings. So in these 6 meanings are applicable in 6 different contexts. So what are the different contests and what are the
meanings of the samuchaya. Now we discuss about the first meaning. So what is the first meaning of samuchaya? So in this first meaning, common terms in the equation, then you have to take the common term and is equal to the 0. So that means here, Yeah. Hello, madam. Voice is not clear. Ma'am, voice is, I can't hear you, ma'am. okay. So आप थोड़ा मोबाइल को थोड़ा सामने लेके जाओ, तभी फायदा होगा शायद. samuchaya means get down. All times concerned. So this is the first meaning of samuchaya. What is the meaning of samuchaya? In the first meaning here, we are discussing about that there exists any common factor. Then we have to take first of all concern all the common factors and that factor take the common and this is equal to 0. So the first meaning, the samuchaya says the first meaning. The first meaning is samuchaya means which is a common factor in all terms. So for example, in x, which is a x plus 3x plus 6x. So in this one, this sutra is using only for simple equations. So here, whenever we are taking simple equations, here, in this one, there exists only x terms, only one x terms. Lx plus 3x plus 6x plus 4. In this one, all terms are having the x common term. So here, now, here, common term is Madam, voice is not coming, ma'am. Whatever you are writing, it is very clearly visible. So try to use mobile in a horizontally, so that you can visible very clearly. Okay. Madam, put it very close, ma'am, so that we can hear you in a. Yeah, that is the best, I think. Is it clear, sir? Now, Only are you voice. No, ma'am. Only voice is breaking. Remaining everything is fine. Hands okay. 1 minute, sir. No, it's fine, madam. Yeah. Madam, just to speak out whatever you want to say. Can I write on the whiteboard so that is very easy for us? Okay, sir. So here, the common factor is x. Here, what is the next step? First step is we have to take the common factor. So what is the common factor? The common factor is x. Now it is audible, sir? Hmm. No, Not fine. still it is breaking. Not clear, sir? No, madam. No, ma'am. Voice is breaking, ma'am. Actually, I am taking from the college, sir. So in this, so Wi-Fi is not there, sir. I am taking in my phone. Yeah, no Maybe- problem, madam. Just you speak. आप जो भी बोलते हैं माइक के पास बोलिए, जस्ट पढ़िए, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ पूरा.
Okay, Yes, sir. okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. So, right. 1 minute, ma'am. Just 1 minute. Yeah, please, ma'am. Okay, right. So, here we discuss about the Samuchaya Sutra, sir. In the Samuchaya Sutra, in the first meaning of the Samuchaya Sutra is the same. Is same. And whenever we are taking the Samuchaya, then that is equal to 0. Example. For example, here I am taking the 12x plus 3x plus 6x plus 4x equal to 0. So what is the x value? Find the x in this equation. Right. So here, what is the common factor of this equation? Here, the common factor of the equation is x. So now, here, the first step is we are taking the common factor, and the next step is the common factor is equal to 0. The common factor is equal to 0. Okay. Hence, we get the solution is x equal to 0. So this is the first example of the Samuchaya. And also, I'm taking the second example. So that example is find x in 7 into x plus 1. 7 into x plus 1 equal to 8 into x plus 1. So, in this type of problems, first of all, we are taking also common factor. What is the common factor here? X plus 1 is a common factor. Now, we can take that the common factor is 0. Now, what is the solution? Now, we are getting that x equal to -1. Hence, the solution of the given equation is x equal to -1. So, this is the second example of the first meaning of Samuchaya. Understand? Yes. Yes, ma'am. Okay. Next. So, here, what is the second meaning of Samuchaya? In this one, here we are taking that Samuchaya means the product of independent terms. The product of independent terms on both sides are equal. On both sides are equal. Then we get the solution. X equal to 0. Okay, now we discuss about the example. So here, find x in x plus 8 into x plus 9. X plus 8 into x plus 9 equal to x plus 3 into x plus 20. Okay. In this equation, what X we are having the independent terms for x plus 24. X plus 24. Okay. So here we are having the independent sum. In the LHS we are having the 9 and 8, and in the RHS we are having the 3 and 24. Now we can find the product of these independent terms. 72 equal to 72. So then if the products of terms are same, if the product is same, then we are getting the equation is x equal to 0.
Okay. So this is the second meaning of the samuchaya. In the first meaning, we are taking the all the common factors, then we are getting the x equal to 0. And the second meaning is whenever we are having the product of independent terms are equal, then we are getting the x equal to 0. And the next. Please, madam. Yes, quotient of x square is also same. Right. And the next example, find x in x minus 7 into x minus 9 equal to x minus 21 into x minus 3. Okay. Here independent terms are minus 7 and minus 9 and also minus 21 and 3, minus 3. So here we are getting the product is same, that is 63. 63 equal to 63. So both are same. Then we are getting the solution is x equal to 0. So this is the second sutra of Samuchaya. Next, third meaning. So in the third meaning, here we are taking that if the sum of the denominator same when the numerators are same. Denominator same. Right. Okay. When the numerators are same. When the numerators are same. So okay, here, for example, find x in 1 by 3x minus 1, 1 by 3x minus 1 plus 1 by 4x minus 1 equal to 0. So here, first of all, we are checking that whether the numerators of the terms are same or not. So numerator is the one, then both are same. Next, now the sum of the denominators. The sum of the denominators is equal to 0. So here what are the denominators? 3x minus 1 plus 4x minus 1 equal to 0. We are getting the 7x minus 2 equal to 0. Then x equal 7x equal to 2, x equal to 2 by 7. Okay. So this is the solution of the given equation. So this is the third meaning of Samuchaya Sutra. In this one, we are taking that whenever the numerators are the equal, we can take the sum of the denominators, then that is equal to 0. Then we are getting the solution of this equation. So next example, second example. Find x in 2 by 4x plus 3 equal to 2 by 6x minus 7. So in this one also we are having the numerators are same, that is the 2. When the numerator is 2. Now we take the
sum of the denominators, it is equal to 0. Sum of the denominators, it is equal to 0. We are getting the 10x minus 10. Sorry, 10x minus 4. 10x minus 4 equal to 0. 10x equal to 4, x equal to 4 by 10 or 2 by 5. So this is the solution of the given equation. So this is the third meaning of samuchaya. Here we are having the, we are discussed about the first and second and third. What is the first meaning? In the first meaning, we are taking all the common factors that is equal to 0. And the second meaning is whenever we are having the independent terms, then the product of two independent terms are equal on LHS and RHS, then we are getting the solution x equal to 0. Yes, very good. This is the second meaning. And the third meaning is if the sum of the denominators, whenever we are taking the sum of the denominators, the numerators are equal. When the numerators are equal, then we are getting the sum of the denominators is equal to 0. Then we get the solution of the x equal to something. Okay, so this is the third meaning. Any doubts in these three meanings? No, ma'am. No, madam. Right. Next, fourth meaning. In the fourth meaning, we are having the two cases. First case. Right. In this case, samuchaya means combination. That is the sum of numerators. That is the sum of numerators is equal to sum of denominators is equal to sum of denominators. Then equate the sum to 0. Then equate the sum is equal to 0. Is to the 0. Right. So here, first example. Find x in 2x plus 5 by 2x plus 5 by 2x plus 11 equal to 2x plus 11 by 2x plus 5. So here, in the step 1, right, sum of the numerators is 2x plus 1 plus 2x plus 11. That is equal to 4x plus 16. And the sum of the denominators, 2x plus 11 plus 2x plus 5. Here it is equal to 4x plus 16. So both the sums are equal. Then in the second step, we are taking that this is equal to 0. That is 4x equal to minus 16, x equal to minus 4. So this is the solution of this equation, given equation. So this is the first example and the first case of the samuchaya mean. So here we are taking the sum of the numerators is equal to sum of the denominators is also equal. So actually here in this case, we are taking that whenever we are taking the LHS, then we are taking the reverse of the RHS. So, okay, here in the LHS, we are having the 2x plus 5 by 2x plus 11. But in the RHS, we are taking that
1 by 2x plus 5 by 2x plus 11. And what is that? Suppose that this is the reverse 1 by something. So reverse of this equation. So this is the first case of the samuchaya in the fourth meaning. And the next case 2. Case 2. In the case 2, samuchaya means combination in the algebraic total. In the algebraic total. If there is any numerical factor, if there is any numerical factor, then remove the factor. Then remove the factor and equate the sum is 0. Equate the sum to 0. So this is the case 2. Now we are discussing about the example. Find x. Find x in 3x plus 4 by 6x plus 5 equal to x plus 1 by 2x plus 5. So here, first of all, we are checking about the sum of the numerators. 3x plus 1, 4 plus x plus 1 equal to 4x plus 5. And the next sum of the denominators. 6x plus 5 plus 2x plus 5. That is equal to 8x plus 10. Now I am taking the 2 common in this equation. That is 2 into 4x plus 5. Here we are in the sum of the numerators, we are having the 4x plus 5. But the sum of the denominators is 2 into 4x plus 5. So here 4x plus 5, 4x plus 5 is equal. Then what is the numerical factor? 2. 2 is the numerical factor. Then remove the 2. Then we have the sum is equal to 0. Remove 2. Then we are getting that the sum is equal to 0. That is x equal to minus 5 by 4. So this is the solution of this equation. So in this case, just we are removing the numerical factor. 2 is the numerical factor. Then we are removing that factor. Next, another example. Find x in 6x plus 5. 6x plus 5 by 11x plus 20 equal to 7x plus 9 by 15x plus 8. Okay. So now adding the numerators, then we are getting the 6x plus 5 plus 7x plus 9. That is 13x plus 14. Sorry, 15x plus 13 only, ma'am. 13, sorry. 13x plus 14. And the next denominator, the sum of the denominators is 11x plus 20 plus 15x plus 8. Then what we are getting? 26x plus 28. So then 2 is the take common. Then we are getting the 13x plus 24. Here also we are taking the 2 is the numerical factor. Then we are removing the 2. Then we are getting the both are equal. The sum is the equal. Then the sum is equal to 0. The x equal to what? Minus 14 by 13. So this is the another solution of this equation.
So here, another example, not solution, sorry. So this is the fourth sutra of Samuchaya. In the fourth sutra, we are having the two cases. In the first case, what is the first case? What is the first case? Here we are taking the whenever the sum of the numerators and the sum of the denominators are equal, then that sum is case 1, n1 plus n2 equal to d1 plus d2. Then we get that x equal to 0. Sorry, x equal to some equation. In the case 2, some factor k into d1 plus d2. Then we are removing the k. Then the sum is equal to 0. Then we are getting the solution. So this is the fourth meaning of the Samuchaya. Fourth meaning of the Samuchaya. So next, fifth meaning, and what is the next application of this meaning? So here, in the fifth meaning, Samuchaya includes subtraction, two, when the quotient of x, when the coefficients of x are different, when the coefficients of x are different, which is useful for the quadratic equation, which is useful for the quadratic equation. So here, this means here we are taking the, so the coefficients of x are different. In what are the coefficient of x? Here, suppose that, for example, find x in 3x plus 4 by 4x plus 7, 4x plus 7, 3x plus 4 by 4x plus 7 equal to 5x plus 6 by 4x plus 3. So here also the coefficients are different. X coefficients are different. When the numerator or denominator is the same, but the numerator is different. Again, add the numerators. Then we get 3x plus 4 plus 5x plus 6. Then we will get the 8x plus 10. So similarly, add the denominators. We get also 8x plus 10. In this case also both are same. The sum is same. So then we are getting the sum is equal to 0. That is x equal to minus 10 by 8 or minus 5 by 4. Okay. So this is the solution of the given equation whenever we are taking the, so the x coefficients are different in the numerator, but here in this example we are having the denominator, the coefficient of denominator is same. Now this is the step 1 and the step 2. Step 2. Now observe the quotient of x square. Now observe the quotient of x square
on cross multiplication. On cross multiplication. We get 12 and 20. 12 and 20. Since we are having the equation is 3x plus 4 by 4x plus 7 equal to 5x plus 6. 3x plus 4 by 4x plus 7 equal to 5x plus 6 by 4x plus 3. Then we are taking the cross multiplication. We are getting the 3x plus 4 into 4x plus 3. The quotient of x square is 12. And also 5x plus 6 into 4x plus 7. Then the quotient of x square is 20. Five x plus 6 by 4x plus 3. So by the cross multiplication, we are getting the x square quotient is 1 is 12 and 20. 12 equal to 20x square. So here we are getting the quotient of x square is 12 and 20. Now, difference between N1 and D1. N1 and D1. What is that? We are getting that x plus 3. X plus 3. Similarly, the difference between N2 and D2. We are getting also x plus 3. Here, the difference of the equations is same. Then, we have to take that the sum is equal to 0. Hence, we get that x equal to minus 3. Okay. This is the fifth meaning of Samuchaya. In the fifth meaning of Samuchaya, we are using that first of all. In the first case, we are taking that whenever the x coefficients are not equal in the numerators, then we are getting that the sum of the numerator and denominator is equal, then we are getting that the solution. And the case 2, where we are taking the cross multiplication, then we are getting the x square coefficients. Those are 12 and 20. Then also find out the difference between N1 and D1 and N2 and D2. Then the sum is equal. Whenever the sum is equal, then we are taking that sum is equal to 0. Hence, we are getting the solution of the given equation, x equal to minus 3. Okay. So this is the fifth meaning. So any doubt? Ma'am, in first one we have taken and D1 minus N1, like 4x plus 7 minus 3x plus 4. So here I am taking the only difference between N1 and D1. Okay, we can take D1 and D1 minus N1. Okay, so we can take D1 minus N1 or N1 minus D1, same thing. Big is the Okay. 4x plus 7. Okay. Okay, ma'am. Okay. So that's why here I am taking that 4x plus 3 minus of 3x plus 4. Then we are Understood, ma'am. getting that x plus. Yes. So what we are getting the 3x plus 4 minus 4x minus 3. So here we are getting that minus of x plus 3. Actually, okay, you are doubting. What is your doubt? 4x, 3x plus 4 minus of 4x plus 3. That is your doubt? My doubt is, ma'am, we have to do every time N1 minus D1, or we can do D1 minus N1 also, as we are getting a positive answer, the same answer. So, okay, 3x plus 4. No, here I am taking that only in the cross multiplication. Yes, minus of x plus 3. Until here, what is the difference? Minus 1 is the difference. So here I am taking that minus 1 is the common. So then until we are using the before meaning, then the common factor is no. Okay. Okay, ma'am. Okay.
Before meaning you can take the common factor, ignore, then we are getting the both are same. Okay, is it clear, ma'am? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Actually, okay, your doubt is we are getting that minus of x plus 3, and but in this one we are getting that x plus 3. How we can take the both are equal? This is your doubt, ma'am? Yes, ma'am. It got clarified, ma'am. Understood everything. Okay, okay. Okay, can I continue? Yes, Right. madam. Next, sixth meaning. So in this one, in the sixth, we have the cases. In the first case, samuchaya means total according to Shunyam Sutra, the sum of the denominators on LHS and sum of the denominators on RHS are same, then the sum is equal to 0. Okay, for example, find x in 1 by x minus 5 plus 1 by x minus 11 equal to 1 by x minus 6 plus 1 by x minus 6 plus 1 by x minus 10. So now sum of the denominators equal to on LHS x minus 5 plus x minus 11. Then we are getting the 2x minus 16. Sorry. This is also X minus. minus 5, not plus 5, sir. X minus 5. Yes. So, and the sum of the denominators on RHS, x minus 6 plus x minus 10. Here also we are getting that 2x minus 6. Both are same. Then the sum is equal to 0. 2x minus 16 equal to 0. So, x equal to what? 8. So, this is the first case. And the next, second case. Case 2. Here, thin disguises, T-H-I-N, thin, D-I-S-G-U-I-S-E-S, thin disguises. So, in this one, we are taking this sum of the denominators on LHS and the sum of the denominators on RHS are not equal. So, okay. So, suppose that these are not equal. What is the process for finding the solution? So, okay. For example, find x in 1 by x minus 8 minus 1 by x minus 7 equal to 1 by x minus 10. 1 by x minus 10 minus 1 by x minus 9. So, first of all, we find out the sum of the denominators on LHS
So denominators on LHS and denominator on RHS, we are getting the 2x minus 19. So here the sum is different. So both are not equal. So in this case, we can transpose or exchange. Transpose means we are exchanged. Transpose the terms on both sides. So that means we are taking the whenever we are having the negative terms in RHS, taking the LHS, and what is the negative term in the LHS, taking the RHS. So that is 1 by x minus 8 plus 1 by x minus 9. Yeah, okay, right. Equal to 1 by x minus 10 plus 1 by x minus 7. So now adding the denominators on LHS and also adding the denominators on RHS. So we are getting the same. The sum is same. Then the sum is equal to 0. So we are getting the solution x equal to 17 by 2. So this case is whenever the sum of the denominators and numerators are not equal, then we can exchange or transpose. We can transpose the numerator and one value of the LHS and one value of the RHS. Then we get the same solution. Okay, then that is a solution. Then the sum is same. Then we are getting that the sum is equal to 0. So this is the case 2. That case 2 we can call the tin disguises. And the next case 3. Case 3. Medium disguises. Medium disguises. In The medium disguises. Medium DISGUISES. So in this case, first of all, we are taking the what is the first value, numerator and denominator, x minus 3 by x minus 4. X minus 3 by x minus 4. It can be also written as 1 plus 1 by x minus 4. So taking the LCM, then we are getting the same value. X minus 4 plus 1, that is x minus 3 by x minus 4. Similarly, the second equation is also we are taking that 1 plus 1 by x minus 5. It is equal to 1 plus 1 by x minus 6 plus 1 plus 1 by x minus 3. So both are 2 plus 1 by x minus 4 plus 1 by x minus 5. So adding ones or 1 are cancelled. Then we are getting that 1 by x minus 4 plus 1 by x minus 5 equal to 1 by x minus 6 plus 1 by x minus 3. Okay, next. Now adding the numerators on LHS. 2x minus 9. Similarly, on RHS, we are getting the 2x minus 9. So both are equal. Both are equal. Then we are getting the sum is equal to 0. Hence, we are getting the solution x equal to 9 by 2. So this is the another case. That case is the medium disguises. So we are changing the given values by adding the 1. Okay. And we are getting the sum of the denominators on LHS and the sum of the numerators on LHS both are equal. Hence, we get the sum is equal to 0. That is, we are getting the solution x value. Okay. So this is the case 3. And the last case in the sixth meaning. Last case in the sixth meaning. That is that thick disguises. THICK.
thick disguises. Thick disguises. So in this case, we are taking that some of, sorry, by the cross multiplication, we get the sums on LHS is equal to the RHS. That is N1D2 plus N1D2 plus N2D2. No, sir, we are taking the cross multiplication N1D2, N1 into D2 plus N2 into D2 equal to N1D2 plus N2D1. So, for example, find X in 2 by 2x plus 1, 2 by 2x plus 1, 2 by 2x plus 1 plus 3 by 3x plus 2 equal to 1 by x plus 1 plus 6 by 6x plus 1. 6x plus 1. Okay. Now, first of all, we are taking that N1D2. N1D2. 2 into 3x plus 2. So, next N2D1. N2D1 equal to 6x plus 3. Now, add this total N1D1 plus N2D2. Then we are getting that 12x plus 7. This is only LHS and RHS. In the RHS, we are taking that 1 into 6x plus 1. It is equal. And another one 6 into x plus 1. 6x plus 6. Okay, now add these two terms. Add these two terms. 12x plus 7. So both the sum is equal. Then that we are taking that sum is equal to 0. So x equal to what? Minus 7 by 8. This is the fourth case of the sixth meaning of the samuchaya. So in the sixth meaning, we have the four cases. First case is whenever the sum of the numerators and denominators are same, then that should be equal to 0. So here in this case, we are taking the Samuchaya Sutra. In the second case, we are discussing about the 10 disguises. In this 10 disguises, we are taking that whenever the sum of the numerators and denominators are not equal, then we are exchange the or transpose the what is the transpose the values. Then on RHS can be write the LHS and LHS can be write the RHS. Then we will get the sum of the denominators on LHS and RHS both are equal. Again, the sum is equal to 0. Hence, we get the solution. And the case 3. In the case 3, we are having the value and we are taking the value is that we are transposing and we are changing the value. The first value, add something value, then we are getting the equation. And so x minus 3 by x minus 4, we can change as the
1 plus x minus 4. Here also we are taking that x minus 4 by x minus 5 can be changed as that 1 plus 1 by x minus. And here we are changing the given equation, then adding the numerator denominators on LHS and RHS. Then we are getting the same solution, sorry, same addition. Then we are getting the 2x minus 9 equal to 0, x equal to 9 by 2. And the fourth one is, what is the fourth one? In the fourth one, whenever we are taking the cross multiplication and adding these two values, then we are getting the same sum and LHS. And similarly, we are taking the by the cross multiplication n1 d2 plus n2 d1. Then we are getting the same sum 12x plus 7. Then both the sums are equal. Then we have to take that the sum is equal to 0. Hence we get the solution. Okay? So these are the 6th meanings of the samuchaya. Okay, understand? So any doubts, please ask. Anybody have any doubts? So you can ask to ma'am. No doubt. Yeah, thank you so much, madam. Thank you, sir. Yeah, very good concept explained by you. Thank you, sir. Yeah. And are you from? I mean Vizag. No, sir. From Hyderabad, I am working at Indi Mahavidyalaya, sir. Oh yeah, yesterday. Yeah. Okay. Got it. Thank you. Welcome, sir. So we will wait for next presenter. Rashmi Yadav, ma'am. Let me call her. Yes, sir. Are you there, ma'am? Yes, sir. Yeah, sorry. देखा नहीं. Yeah. एक 5 minutes break क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख चुका है ना, इसलिए 5 minutes ब्रेक लेने के बाद अपन डिस्कस करते हैं. थोड़ा पानी वगैरह. No issue. Sir, Yes, madam. sir, actually, we have internals for my MSc Mathematics, sir. So Okay. can I leave, sir? Yeah, definitely, ma'am. No issue. Okay, thank you, sir. Actually, if you look into the Swamiji book, so most of the concept Swamiji given in his book only algebra only. पूरा algebra भी डिस्कस होता है स्वामी जी का बुक में. न्यूमेरिकल बहुत कम होता है. एक्चुअली मैडम के लिए पोल देना चाहिए एक बार. आप मैं पोल लॉन्च करता हूँ मैडम के लिए.
Yeah, thank you. Can I start, sir? Yeah, sure, ma'am. You can. आपको कोच भी बना दिया मैं, आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन को। Yeah, thank you. My presentation on in division Vedic mathematics plays an important role. Importance of Vedic mathematics. Vedic mathematics is a gift to this world from the ancient scholar of India. The name of Vedic is derived from the Sanskrit word Veda, which means knowledge. Vedic mathematics is a collective name given to a set of 16 sutra and 13 subsutras that can be used for solving mathematical problem in a far simpler and easier way. The simplicity of the method increase flexibility and also help students to find their very own unique way. Here lies the beauty of Vedic maths. It doesn't remain limited to the same rigid approach and enable the pupils to be creative. Benefits: it helps to solve mathematical problem 10 to 15 times faster. It sharpens the mind, improve mental ability and intelligence. Vedic math for kids helps in increasing the visualization and concentration. It reduces dependence on calculators. It cultivates an interest in maths and help in eliminating maths phobia. Vedic math method came as boon for the student appearing all the types of competitive exam like MBA, SET, etc. मैडम आपका स्लाइड तो दूसरा है, जी, स्लाइड्स चेंज किया आपने? yes sir. मेरे को डिवीजन वाला स्लाइड दिख रहा है। आपको डिवीजन वाला स्लाइड दिख रहा है? Wait, हाँ, अभी कौन सा स्लाइड दिख रहा है आपको? 6th वाला। 6 वाला ना? हाँ, ये है अभी. राइट। That's my paper abstract. This हाँ, paper include an excellent research on the group of 20 students of graduation level who are selected from 50 students. This study is based on the uses of Niklam and Paravartya usage. Method to the division problem involving table near about 1000. Division operation are used in many problems such as square root, cube root, etc. Paravert usage is used by these students for enhancing the mental capability and reducing the time duration during the session. The main component of the paper are accuracy and fast calculation. मैडम जी, आप स्लाइड चेंज किया क्या? हाँ जी, एक बार अपन को ये नीचे वाला 73% है ना, नीचे 73% पे. लेफ्ट साइड कॉर्नर, वो नहीं मैम, लेफ्ट साइड, उधर अपन को प्ले करने का बटन होता है ना, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो उसको, या अभी हो रहा है? लेकिन हमको फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वही प्रॉब्लम। मेरे को तो नहीं दिख रहा है, बाकी लोगों के बारे में पता नहीं। प्लीज कोई बताएगा कि मेरा फुल स्क्रीन शो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है नहीं मैम। हो रहा है मैम, नहीं हो रहा है।
अभी हो रहा है क्या? नो मैम। अभी भी नहीं हो रहा? मेरा फुल स्क्रीन अभी शो हो रहा है क्या? एक అమ్మా బాగుంది. अभी शेयर हो रहा है आपको मेरा स्क्रीन? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है मैडम। स्क्रीन अभी आपको शो हो रही है? ఎస్ మేడం. ओके, फुल स्क्रीन नहीं, मैं शेयर कर दूं मैम पीपीटी को, इफ यू डोंट माइंड। ओके, आप शेयर कर दीजिए, नो इशू। अच्छा, एक मिनट में। సాయి एक मिनट में। मैडम मेरे को दोबारा आप सेंड कर सकते हैं उसको एक बार? ओके, आई विल सेंड अगेन। या प्लीज। प्लीज चेक योर व्हाट्सएप। हाँ या मैंने गॉट इट। एक मिनट शेयर कर देता हूँ। या कौन सा स्लाइड मैम? स्लाइड 8, दिस इज ओनली बेनिफिट्स ऑफ। इंट्रोडक्शन, 8 स्लाइड। दिस वन, या ओके।
Is it visible to everyone? No, no. First slide visible हो रहा है. हाँ, that's it. Yeah. Introduction. Vedic mathematics is the name of ancient system of mathematics which rediscovered from the Vedas between 1911 and 1918 by Sri Bharati Krishna Tirth Ji Maharaj. Jagat Guru Shankaracharya Swami Bharati Krishna Tirth, born on 14 March 1884 in Tamil Nadu. He was an Indian monk and Shankaracharya of Govardhana Mutt in Puri, Odisha from 1925 to until his death. Swami's childhood name is Venkatraman. Vedic Mathematics, the book and title as written by Swamiji, has 16 sutra and 13 sub-sutra which can be used for all branches of mathematics. Next slide, please. मैं next slide नहीं आ रहा क्या? No, that's it. Nicola method is applied to nearest base like that 10, 100, 1000. Remember that 10th complement of 9 is 1. Let's first try first slide again आ गया. No, it is visible, ma'am. No, sir. So please wait, maybe taking time to load, but I am on the same slide, whatever you are saying. The format is different, that is the problem. I'm trying again. मैं try करती हूँ. My screen is visible now. Yes, madam. Yes, madam. Okay. Nicola method is applied to the nearest base like that 10, 100, 1000. 10th complement of 9 is 1. Let's try to find the answer, the division problem. 102 divided by 9. So firstly, we do divisor part. Partition करते हैं हम. तो जो हमने 10 का कॉम्प्लीमेंट लिया है 1 9 का कॉम्प्लीमेंट हमने जब लिया तो मिला 1. We can take in divisor part and 102 break in two parts. 10 is the question part and 2 remainder part. Because divisor part is having 1 digit, that's why we can take remainder part 1 digit. This is the process. क्वेश्चन पार्ट का जो 1 है वो हम डायरेक्टली लिखेंगे क्वेश्चन में एज इट इज एंड देन मल्टीप्लाई विद 1. डिवीजर पार्ट के 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे मैंने प्रोसेसर में एरो दिखाया है, 1 प्रोसेस दिस वन एंड द सेकंड नंबर. Yes. 1 and 1 and we write 3. 0 के नीचे हम 1 लिखेंगे. This third step. 0 plus 1 is the 1 and again we multiply 1 into divisor part 1, then we get 1 and 2 plus 1 is 3. So our question part is question 11 and remainder is 3. In this method, we use complement of divisor. Like that, अगर आपके पास 9 है तो आप 10 से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और आपको 1 मिलेगा. अगर आपके पास 8 है तो आप 10 से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और 2 मिलेगा. Which means मतलब अगर 5 से बड़ा नंबर है हमारे पास तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट या विनोकुलम जिसको कहते हैं वो कन्वर्ट करके उसको यूज करेंगे और हमारे पास जो टेबल का बर्डन है वो बहुत कम हो जाता है. दिस इज द प्रोसेस.
Now we take another method, Paravarti Yoseit method can be applied when divisor is above the base. Nicklam method use below the base and Paravarti method use above the base. The operation of the part has been changed the Paravarti formula to change the sign of the positive to negative and negative to positive. In this method, the sign of the remaining digit are changed except the first digit of the dividend. The rest of action is done according the same as Nicklam method. Let us try another example. 11 is our divisor part. Then complement of 11 is 1. Is the above base 1. Then we take in divisor part 1 and dividend part 2, 3, 5 and remainder part 7 because divisor part have one digit. That's why remainder part also have one digit. Procedure same as a Nicklam method. We can take 2 as it is in question part and then multiply 2 into 1 and write in below 3, 2. So 3 minus 2 because Paravarti Yoseit convert the sign positive to negative. Then 3 minus 2 we get 1 and again 1 into multiply by 1 and we get 1 or we write below 5 in 1. 5 minus 1 is equals to 4 and process the same. Then we get question is 214 and remainder is 3. Working process, this is the first step. हम 2 को as it is लिखेंगे, then multiply. This is the step, and then write here 2, and process will be same. Paravarti Yoseit method used for above the base. It means if you have 11, then we get you can take complement 1. 12, so you can take complement 2. In case digit above then मतलब 99 अगर हो निखिलम में तो हम उसको 1 लेंगे और अगर 102 है तो हम उसको 02 लेंगे. 02 बिकॉज बेस जो है हमारा 100 है और उसमें जीरोस 2 है तो वो यहाँ डिविजन पार्ट में 02 लिखना हमारे लिए बहुत कंपलसरी है. ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 02 है तो आप उसको 2 लिखेंगे. आप 02 लिखेंगे और प्रोसेसर बिल्कुल सेम रहेगा. इट मीन्स आपके बेस में जितना जीरोस है आपको उतना डिजिट डिविजन पार्ट में लिखना है एंड डिविजन पार्ट में जितने डिजिट्स हैं आपके उतने डिजिट्स आपके रिमाइंडर पार्ट में आपको लिखने हैं. In this study, a learning session on Vedic method has been taken of some student. After explaining the some example on division by applying Vedic method, exercise based on division problem is to the student for practicing the above sutra, which we discussed in the same session. Division problem can be solved by using easy operation of multiplication. But by using certain techniques of Vedic mathematics, typical division problem can be evaluated very fast and accurate. The research was completed with the objective of making mathematics more easy and interesting for the student. The action research has been conducted for 2 days and exercise based on division problem were collected and then estimated on the same session. We observed the time taken by each student per question has been reduced in the same session. Here we gave an example to the student for solving with both the modern and Vedic methods. Sample of some student work. You can see when we can question modern method, the student take time 2 minutes and Vedic method say 24 सेकेंड. ये एक्सपेरिमेंट मैंने ग्रेजुएशन स्टूडेंट पे किया था. आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट का मतलब समझते हैं कि बचपन से लेके ग्रेजुएट मतलब
18-19 साल उन्होंने इस मेथड को सीखा, जिससे वो डिवीजन किया, और उसके बाद ये मेथड उन्होंने सिर्फ 2 घंटे सीखा, 2 दिन, उसमें मतलब 1 घंटा, आधा आधा घंटे की क्लास, और उसको उन्होंने जब किया तो 24 सेकेंड, और जो बचपन से जिसको उन्होंने 18-19 साल से उसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उसमें उन्होंने टाइम लिया 2 मिनट। ये इंडिविजुअल कैंडिडेट का टाइम है। अगर हम औरों की बात करें तो उन्होंने ज्यादा लिया। और एक एक्सपेरिमेंट में मैंने ये भी देखा कि जो बच्चे बचपन से ही मेथड को सीखते आ रहे हैं, उसमें उनको एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं थी, टाइम को ज्यादा ले रहे हैं, और उनको मतलब डर था हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। की लिस्ट मैंने देखी उनकी कि किसी ने मॉडर्न मेथड में टाइम लिया 1 मिनट 33 सेकेंड का, और उसने वैदिक को इतने टाइम में किया। आप देख सकते हैं कंपैरिजन में कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ का देखिए। इन कंपैरिजन ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स, जिसे हम 17-18 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वैदिक मैथमेटिक्स जिसको हमने आधा या 1 घंटा सीखा, उसमें हमारी एक्यूरेसी भी फास्ट है, स्पीड भी फास्ट। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो आप ये एक्यूरेसी देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जब बच्चा मॉडर्न मेथड से क्वेश्चन कर रहा है तो उसकी एक्यूरेसी, कहीं उसने 2 मिनट लेके भी अगर क्वेश्चन किया तो वो क्वेश्चन गलत किया, और यहाँ उसने 40 सेकेंड में भी क्वेश्चन किया तो उसने क्वेश्चन को सही किया। आप देख रहे हैं कि जो उन्होंने सीखा उसमें उनकी एक्यूरेसी बहुत कम है, और जो उन्होंने जस्ट 1 घंटा पहले सीखा उसमें उनकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा अच्छी है। ये मॉडर्न मेथड का टाइम है और वैदिक मेथड के टाइम को मैंने एक्यूरेसी चार्ट पे कंपेयर किया। It's my calculation. Conclusion. We observe that the students are very electrified about the Vedic mathematics method. They are important to acquire the knowledge of Vedic mathematics techniques. At the end of this session, students show better results based on division problem in the comparison of modern method. This study helps us to boost a positive attitude and drive away from phobia of mathematics from the student. Our country has a rich environment of Vedic mathematics in history, so we need to continue Vedic mathematics in present era to make student life much easier in comparison of complex calculation. For those of who struggle with maths every day, Vedic maths may change your perspective on how you look at solving complicated problems in the first. If you can see the wisdom in combining learning the pleasure, there are high chance that you will fall in love with Vedic maths. Thank you. And या मैडम थैंक यू सो मच। आपके पास ने आपने बोला है कि इनवर्स का कॉन्सेप्ट है बोला ना, वो टीच करने के लिए कितना देर लगता है आपको? application of inverse mathematics. उसको एक्चुअली सर अभी मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें। मेरी क्लास है थोड़ी देर बाद। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि और एक हाफ एन बट आवर है आई ना। थिंक कि हमें वैदिक मैथमेटिक्स को बेसिक लेवल पे लाना चाहिए। बहुत से लोग इसको नहीं जानते हैं, और बहुत से लोग इसका नाम सुन के ही मतलब कह देते हैं कि कुछ पुराना कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन जो कर रहे मतलब मैंने बहुत से ग्रेजुएशन स्टूडेंट में 2-3 सर्वे पेपर किए डिवीजन के और मल्टीप्लिकेशन के, और मैंने उनमें यही देखा कि बच्चों को अलजेब्रा की डिविजन्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो बचपन से वो सीखते आए हैं उसमें, और जब हम उन्हें ये मेथड सिखाते हैं तो वो बहुत फटाफट कर लेते हैं। तो आई थिंक ये चीजें हमें स्कूल लेवल पे लानी चाहिए, तब वो सीखेंगे। क्योंकि अगर हम उन्हें अभी सिखा भी रहे हैं लेकिन स्कूल उन्हें अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम है इस चीज को। अगर सभी लोग मिलके इस दिशा में काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा।
Yeah, okay. And another question also from my side. So जी can you give me the suggestion regarding PhD in Vedic mathematics? So can you guide how to do in PhD in Vedic mathematics? What is the procedure for that? So सर audience maybe प्रोसीजर तो ये है कि अभी कोई भी यूनिवर्सिटी पीएचडी इन वैदिक मैथमेटिक्स आई डोंट थिंक करा रही है। अगर कोई करा रही है तो बहुत अच्छा। मैं खुद, मेरा टॉपिक है वैदिक मैथमेटिक्स, लेकिन पीएचडी की डिग्री मुझे मैथमेटिक्स में ही मिलेगी। टॉपिक को मैंने कुछ ऐसे लिया है कि उससे मतलब कहीं भी ये नहीं पता चलता कि ये वैदिक में है, लेकिन मैं वर्क किसी पे कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक ये बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों को सिर्फ फोबिया होता है मैथ्स का। अगर हम देखें, जो हम मॉडर्न मैथमेटिक्स एमएससी में भी पढ़ते हैं ना, उसमें भी अगर हम इनके सूत्रों को अप्लाई करते हैं तो टाइम बहुत कम लगता है। ऐसा मैंने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे किया है, फॉरवर्ड बैकवर्ड उसमें ऑपरेटर में यूज किया है मैंने इसको, और भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको अप्लाई कर सकूं। पर देखते हैं। तो अगर आपको पीएचडी करनी है वैदिक मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोगों के लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि वो इसमें आगे और रिसर्च कर पाएंगे उसको एमएससी और बीएससी के मैथमेटिक्स की कनेक्ट करके, क्योंकि अभी थोड़ा बाउंडेशन है इसमें, हम हर जगह इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो मैंने एक पाइथन का प्रोग्राम बनाया है। उसका टाइम में मतलब मुझे टाइम नहीं मिला कि जो हमारी इनबिल्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर करता है और पाइथन से अगर हम करते हैं, अगर वो नैनो सेकंड में भी हमारा टाइम कम कर देता है तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। I had somewhere Vedic maths PhD scholars did in अभी ऐसा पीएचडी वैदिक मैथमेटिक्स में, ये तो ये है ना कि वैदिक मैथमेटिक्स हम सबको सिखा सकते हैं, जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है उनको भी, लेकिन फिर वो क्या रिसर्च करेंगे इसमें। हाँ, उसके लिए नहीं, मैंने हाँ सोचा, मैंने सुना है कि कंप्यूटर में वैदिक मैथमेटिक्स पर पीएचडी किया था, को रिलेटेड करके। हाँ, कंप्यूटर में हाँ हो हाँ, सकती है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन प्रोग्रामिंग मेरा है। एग्जैक्टली बात क्या है कि सिर्फ वैदिक एप्लीकेशन को एक्सटेंशन करके ऐसा कोई पीएचडी कर सकते हैं क्या आपका? वैदिक मैथ उनको एक्सटेंशंस करके फॉर्मूलाज जो है आपके, हाँ कर हम्म। सकते हैं आप उनको लेकिन मैंने एक्सटेंशन कहा भी करके। नहीं सुना था कि ऐसा पीएचडी करा है, इसलिए हाँ पूछ रहा कर हूँ। सकते हैं, कर सकते हैं। डॉक्टर राकेश भाटिया जी, उन्होंने कुछ एक्सटेंशन फॉर्मूला पे ही पीएचडी कर ली है अपनी, हाँ, अवार्ड हो गई है रिसेंटली लिया उनकी। था, हाँ सुना था। रिसेंटली उन्होंने हिमाचल से ली है। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स मैंने उन्हीं से सीखा है। हम्म। और अगर हम, आप डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा जी को तो जानते ही होंगे, हाँ, जानता हूँ। उनके बारे में बात करें तो वो एक फॉर्मूला पे एक पीएचडी करा सकते हैं, उनकी इतनी अच्छी पकड़ है इसमें। थोड़ा बहुत लेकिन गाइडेंस मैं उनसे ही ले रही हूँ। हाँ, उन बहुत रिसर्च किया है, मैं भी सुना था, हाँ क्योंकि कितना एडवांस लेवल पे गया है कि आप हाँ, इमेजिन भी नहीं वो कर एक सकते फॉर्मूला कि। पे भी करा सकते हैं, और जो भारती कृष्ण तीर्थ जी की बुक है उसका एक चैप्टर पे भी वो पीएचडी करा सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या था इसी तरह करने के लिए? प्रोसीजर के लिए आपको अगर मैथमेटिक्स में जाना है तो जो यूनिवर्सिटी अपना प्रोसीजर फॉलो कराती है आपको उसी से जाना होगा। कोई एंट्रांस कराते हैं या नेट वेट हो, उसी से फॉलो करना होगा। ऐसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी करा सकती है, अगर गवर्नमेंट से आप करना चाहते हैं तो वहाँ का जो प्रोसीजर है आपको वही फॉलो करना होगा। आप पीएचडी कर रहा है ना, प्रेजेंट रनिंग हो रहा है ना, आप किस हाँ टॉपिक मेरा पे कर रहे पीएचडी हैं? रनिंग है। हाँ, आप किसका ऊपर कर रहे हैं? मेरा काम तो वैदिक मैथमेटिक्स का ही है, और अभी मैं कैलाश सर से नंबर सिस्टम जो उन्होंने किया है उसके बारे में सीख रही हूँ, और उसी पे मेरा वो रहेगा। अच्छा, वही पेपर है, वही पब्लिश करने वाली हो? हाँ हाँ क्योंकि कैलाश विश्वकर्मा जी का पेपर आप एक बार एक्सटेंशन देखें तो कितना एडवांस है कि वो एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम को वैदिक मैथमेटिक्स को यूज करके कन्वर्ट करने का तरीका, और हाँ डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत सारे, और इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स के बारे में बहुत अच्छा पेपर रिसर्च पब्लिश जी। किया था, देखा था। हाँ मैं उन्हीं से वो सीख रही हूँ, नंबर सिस्टम तो उन्होंने किया है ना, बाइनरी कन्वर्जन और ये। हाँ। हम्म। तो उसी में मेरा वर्क है एक्चुअली, यही मुझे गाइड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। मेरी आवाज आ रही है आपको?
आपका आवाज थोड़ा कम है, ब्रेक हो रही है, ड्यू टू सिग्नल सही नहीं है आपका, उसलिए। ओके ओके। एक्चुअली यहाँ यूनिवर्सिटी में थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, तो इस बारे में हम फोन पे कभी डिस्कस करते हैं। अभी नहीं, मेरा थोड़ा ये क्लास का मेरा टाइम हो रहा है डिस्कशन सर। क्योंकि है कि बाकी लोगों के लिए पता होने। ओके सर, नो इशू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने